Welcome back. Now we are going to discuss about the classification of directive principles of state policy. We discussed that the directive principles of state policy, its significance, its features based upon the articles as well as and also its nature. Today now we are going to discuss about the classification of directive principles of state policy. The directive principles of state policy classified into three different categories, though there is no specific classification written in the constitution, but based upon the nature and the objective of different article, the classification of articles or classification of principles are defined by the different experts. It is not written in the constitution, it is very clear. Then the directive principles of state policy, as we know, the part IB or part 4 of the constitution, then article 36 to 51, it is in the constitution. Then that directive principles of state policy, when we are going to discuss about that, first it is a socialistic principle or socio-economic principle, that is category 1. Then the other one is Gandhian principle. Then the third one is liberal or intellectual principles. So, if there will be question that discuss about the classification of directive principles of state policy, then definitely it will help you to discuss about three different classifications which are not written in the constitution, but based upon the nature, based upon the objective of different articles in these principles or set of principles, then it is categorized into three different categories. One is socialistic or socio-economic principle, then Gandhian principle and the liberal and intellectual principles. First, the socialistic principle. When we are going to discuss about the socialistic principles, these category of principles are like from article 38, 39, 39A, 41, 42, 43 and 43A. These are included in the socialistic principle of directive principles of state policy. Then what is the nature, why these articles are set or included in this socialistic principle? These articles are included in this socialistic principle because these articles are based upon the features or nature or objective which is helping to achieve socio-economic status of the citizen as well as the state. That is the main objective of these articles. Then Gandhian principles, basically it is based upon the ideology of Mahatma Gandhi, the father of nation, and the ideology as per his ideology to uplift the weaker section towards the betterment of their life or for a good life, or to equal with other people or other section of the society. That is the main ideology of Gandhiji. Then when these articles like article 40, 43, 43B, 46, 47 and 48, these are based upon, these articles are based upon that particular ideology, and for that reason these articles are included in Gandhian principles of directive principles of state policy. Then coming to liberal principles. Liberal principles include article 44, 45, 48, 48A, 49, then 48A, 49, 50 and 51. So, when I am discussing about like 39A, 43A, then 48A, that are the added version or added part in that particular article. We will discuss what are the amendment also as well through different constitutional amendment when we are going to discuss further on the directive principles of state policy. To start with the article 36. So, these are the categorization, we will discuss one by one based upon the articles included in the principles or three different principles in directive principles of state policy. Then when we are going to start with the article 36, article 36 is saying about the definition of state. The article 36 define the state with the organs like legislative and executive organs of the central as well as the state government. The central government and the state government, they must have legislative and the executive organs. Then the local authorities and all public authorities in the country must be there. So, as a whole they are defining the definition of state: legislature,
executive, then public authority and the local authorities. They are as a whole defining the definition of a state or defining a particular state with a particular territorial area. Then coming to article 37. So, as based upon the article 37, these principles means the DPSP or directive principles of state policy. These principles are fundamental in governance. So, these principles means the DPSP are fundamental in governance. They are fundamental in nature. They need to like be the guidelines for the government then of the country, and it shall be the duty of the state, it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws and policies. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ପଲିସି ବା ଲ ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲ ପଲିସି ତିଆରି କରିବେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ତାକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଧରିକି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର. So, it is fundamental in governance. It is fundamental in governance. Though it is, as we discuss in the features, though it is not justiciable and unenforceable, but these principles are fundamental in governance to make or to achieve a welfare state. Then coming to the principles which are included in the socialistic principles. To start with the article 38. We'll start with article 38. Article 38 says that, or it is giving instructions to promote welfare of the people by securing a social order. Welfare of the people by securing a social order. Then it is also based upon the justice, social, economic and political justice. So, the government needs to go through a set of like welfare, the concept of welfare state to provide proper social order, providing justice which is social, economic and political in nature, and to minimize inequality. Inequality means in the sense of income, facilities and opportunities. When we are discussing about article 38, it is promoting or like it is also saying that there should be no inequality in the state in terms of income as well as other facilities. When we are discussing जेतबेले आमे देखिबा गोटे वेलफेयर स्टेट रा कांसेप्ट उपरे ताल डेफिनेटली गवर्नमेंट बा सरकार जेतबेले तयारी करूचंती कोनोसी भी लॉ बा कोनोसी पॉलिसी तयारी करूचंती से ओ लॉ पॉलिसी ताकू तांकर बेस रहितवा दरकार जे टू प्रोवाइड all the assistance and the facilities for all the citizens and without any inequality. तेणु जितेबाला आम देखा कौन सी आमर जी भारत वर्षर जो डेवलपिंग कंट्रीर स्टाटस हिसाब से देखा ताले आमर भेराइटीज ऑफ पीपल अच्छा कहार इकोनॉमिकल कंडीशन लोअर अच्छी को मैंने वीकर सेक्शन अच्छा को मैंने रिच सेक्शन अच्छा. सो व्हेन इट इज based upon the experts view in the constitution, they have included that particular article 38 that to provide or to achieve a welfare state and eradicating the inequalities in terms of income and other facilities. That is provided in article 38. Then coming to article 39. The article 39 is also important as it is included in the socialistic principle. When we are discussing about article 39, basically the article 39 is to secure n number of items which are going to help the citizen to get those assistance and also to uplift their status in the society. If we will discuss on the article 39 to secure, first one is right to adequate means of livelihood. So, right to like avail the means of livelihood as well as for all the citizen. It is not for one category of citizen or one particular section of the citizen. It is for all citizens that they need to provide livelihood facilities. Then second one is equitable distribution of material resources as well as community or common good. Equitable distribution, equal distribution, there is a difference between equal distribution and equitable distribution. When you are going to equal distribution means it is the amount of distribution must be same for all, but equitable distribution is based upon the category and the status or economical condition of citizen.
when you are discussing the equitable distribution, as per the jemti ame dekhuche there are different section of people, weaker sections and the middle level section, middle people as well as the other rich people. So if we provide same facilities, equal distribution to all in terms of all types of resources, that will spoil that will create more gap in between the poor and the rich people. So to minimize that and to uplift the poor section or the weaker section, they need to provide equitable distribution. जହାର जेतिकी दरकार तांको से हिसाब रे सब्सिडी दिया जिवो बा किसी असिस्टेंस दिया जिवो, तांको हेल्प दरकार. फॉर एग्जांपल scholarships are not for all the school going children or college going people. So it is based upon the merit, number one, and also sometimes few scholarships are there to help the financial assistance. So when we are going to discuss about that, then definitely it will help people to get scholarship and to uplift their standard and also to meet their objective. जदि कहार फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स कम अच्छी से पाठ पढ़ाई सुजोग पाऊना ताहले स्कॉलरशिप पाइले ताको हेल्प करिवो, सेमाने मध्य अन्य मानक भली कि पाठ पढ़ी पारिबे. सेमती समस्त जदि स्कॉलरशिप दिया जिवो ताहले कोन हबो, तो जो मानकर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड भल अच्छी से एटा गोटे एडिशनल असिस्टेंस मिलिबो और जो मानकर नाही से माननको भी मिलिबो. तेणु एठी रहला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. देन प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन of wealth. Then जेतेबेले equitable distribution of wealth रहिला, then that will prevent concentration of wealth and means of production. जेतेबेले आमे देखिले कोन हबो ना, गोटे सोसाइटी रे कोन हुए ना किछि रिच पीपल थांती, पुअर पीपल थांती आ मीडियोकर पीपल थांती. जेतेबेले तीनटा बेसिकली गोटे सोसाइटी ते तीनटा कैटेगरी लोक रही थांती. कोन हुए, रिच जो माने कैटेगरी थांती से माने कोन करंती, दे एस्टैब्लिश companies or organizations and they incur more profit utilizing the workers from the weaker section or from the working class section. तो जेतेबेले से माने सेही ऊपर डिस्कशन कर माने ता ऊपर जेतेबेले से डिपेंड करथांती, जदि जनक पाखरे वेल्थ रहिची आ से माने ताको यूटिलाइज करके आहुरी मोर प्रॉफिट इनकर करले, एंड डेफिनेटली से माने कोन हेबे पुनी रिचेस्ट ही जिवे सोसाइटी रो. तो ताको अवॉइड करिया पई कोन करा जाय, टू प्रिवेंट दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जनक पाखरे वेल्थ ता गच्छित होय कि न रहू. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 39 as well as the prevention of wealth in a particular section or means of production. Then equal pay for equal work for both men and women. लोक मान सेठी हमर कोन होई किछि भी कॉन्स्टिट्यूशन रो जदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी धरा जाईची, जे जेति की काम करिवो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तेणु सेते बेले जेंडर बेस्ड कोनोसी प्रकार बायसनेस रहिबनी. मेन होंतु बा वुमेन होंतु, जो माने जेति की काम करिवे ता अनुसार तांको पेमेंट मध्य दिया जिवो. सो दैट इज एन्श्योर्ड फ्रॉम or it is secured from the directive principles of state policy from article 39. Then coming to the next phase is prevention of preservation. It is not like preservation of health and the strength of workers and the children. जो वर्कर्स माने काम करती विभिन्न फैक्ट्री रे विभिन्न कंपनी रे तांकर आउ चिल्ड्रेन मानकर हेल्थ को प्रिजर्व करबा दायित्व रोची, आउ से ऊपर बेस करके से माने लॉ किंबा पॉलिसी तैयारी करिवे. जेतले आमे जदि कहि पारे फैक्ट्री एक्ट जेतबेले हेइथिला, तो फैक्ट्री एक्ट रे समानकर बेसी थिला जेतबेले एटा होची डिटेल गाइडिंग प्रिंसिपल्स थिला, इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन किंबा प्रोटेक्टिंग और प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्कर्स. ताल सेमाने डेफिनेटली पॉलिसी तैयारी करिवे जे केमती सेमाने गोटे गाइडलाइन मध्ये रहइबो कंपनी बा फैक्ट्री माननकु सेमाने भलो सिचुएशन बा एटमॉस्फियर देबे, क्लाइमेट भल तांकर जो वर्किंग कंडीशन भल रही दरकार, हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन रहा दरकार, प्लस जो मैंने चिल्ड्रेन मैंने रही सोसाइटी तांकर हेल्थ प्रोटेक्शन पाई गवर्नमेंट किसी पॉलिसी रहा दरकार. जमती आमर अच्छी विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य योजना रे इनक्लूड कराई, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड व्हिच इज securing the health side or preservation of health for children and the working class people. So जदि लोग कोनोसी छोट छुआ को बा लोक माननको वर्किंग क्लास लोकों को वर्कर्स माननको बेसिकली वर्कर्स माननको जदि किछि फोर्सेबल अब्यूज करा जिवो, तांको बलपूर्वक कहा जिवो नै तुम ए काम करबा दरकार,
कि से कम तुमको करने को पड़ो सो से कौन हम ना तर हेल्थ प्रोटेक्शन से मैंने सिक्योर करने पड़ो जदि भी से फैक्ट्री बा कौन कंपनी रे काम करुवे आज वर्कर तेणु से कौन कले एनश्योर जो करुँच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डेफिनेटली इट विल हेल्प और it is an assistant for the weaker section and for the workers as well as the children in the society. Then coming to another one is the same in article 39 opportunity for healthy development of children जोटा कि आमे कहूचे जोटा अंगनवाड़ी केन्द्र हो बा जो आमर पुष्टिकर खाद्य जो योजना सब करा जाउची टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट इज बिकॉज ऑफ एन्श्योरिंग हेल्दी चिल्ड्रेन इन द सोसाइटी तेणु से जो हेल्थ को प्रोटेक्ट करने यहाँ जो करा तेणु 39 जो आम कहूँ आर्टिकल 39 तो आर्टिकल 39 रही फ्रॉम द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ठू आरंभ करिकी इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन बोथ देन जो लास्ट रही अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन दैट इज आर्टिकल 39A दैट इज आर्टिकल 39A जोटा कि अमेंडमेंट रे ऐड होता और 42nd अमेंडमेंट 1976 रे गोटे अमेंडमेंट होता विल डिस्कस मोर ऑन द अमेंडमेंट दैट आर एडिशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड बट एटा जो आमर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन रही ऐड करा 39A रे सेटा रही कौन रही ना जितेबले 39 रे ऐड करा 39A रो अलगा रही 39 रे जो ऐड करा अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन दैट इज ड्यू टू 42nd अमेंडमेंट 1976 और जोटा कि इमरजेंसी पीरियड टाइम रे जो आमर 1975 रे इमरजेंसी पीरियड रही से टाइम रे ये अमेंडमेंट आसीथिला और ये अमेंडमेंट प्रपोजल अनुसार अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ऐड करा 39 आर्टिकल 39 देन कमिंग टू आर्टिकल 39A ताले आर्टिकल 39A ताले कौन रही आर्टिकल 39A रे कौन ऐड करा जे आर्टिकल 39 टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर से माने कोनोसी जदि वायोलेशन हबो तांकर फंडामेंटल राइट्स रो बा कोनोसी जदि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क न हो पाला किंबा सेमानकर प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन गोटे वर्किंग कंडीशन न मिलला जदि से ग्राउंड रे बा राइट टू जो से जो राइट तांकर मिलिची मौलिक अधिकार हो किंबा जो गुड़िक एनफोर्सेबल राइट रही ताकू नहीं कि हो किंबा सेमाने कौन करेंगे जो इक्वल जस्टिस तांको न मिलला से ग्राउंड रे तांको फ्री लीगल एड हो पारिबो सेमानक पई कोनोसी प्रकार प्रतिबंधक नाही जे सेमाने जाई परिबे नाही. So article 39A is also addition it is from due to the 42nd amendment 1976 that is to promote equal justice and provide free legal aid to the poor. तो पुअर सेक्शन जो मैंने अच्छे तांको फ्री लीगल एड दवाई आर्टिकल 39A ऐड होता in 42nd amendment 1976. Then coming to article 41. So article 41 says about the to secure the right to work, to education, to public assistance in case of unemployment, old age and sickness or disability. So जितेबाला आम कथा हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर गाइडलाइंस एंड डेफिनेटली आर्टिकल 41 says it is to secure the right to work, right to education as well as to public assistance. कहाँ पे in case of unemployment, in case of old age, in case of sickness and disable. जदि डिजेबल कंडीशन थिबो कहार ओल्ड एज कंडीशन रे किंबा अनएम्प्लॉयमेंट थिबो किंबा ओल्ड एज रे तांको कोन करा जिवो पब्लिक असिस्टेंस पाइबा पई बा एजुकेशन पई किंबा तांकर वर्क काम पाइबा पई से माने से गाइडलाइन प्रस्तुत करेंगे. तेणु किसी समय देखा जाए था जो डिजेबल पर्सन्स दैट आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, दैट आर सो मेनी असिस्टेंस और रिजर्वेशंस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम because of these particular principles or guiding principles. When we are discussing about article 41 to right to work or to get public assistance or for education, there are certain provisions must be framed by the government and during the time of sickness. जदि आम सिक लीव पाचे कौन पाचे
जदि आम देखा गोटे लीव लिस्ट जदि सिक लीव आड करा जाए कौन पाई जदि लोक मैंने काम करुँच काम करवा टाइम रे जदि सिक रही देह खराब है ताले से जो गोटे 2 दिन 3 दिन जो देह खराब रोचे बट जोटा कि बहुत कम पीरियड धरा जाए से अनुसार से चाहिए से फैसिलिटीज दिया हवा दरकार तेणु कंपनी बा फैक्ट्री माने से माने जदि जो माने इन्वेस्ट कर धरा जीव तो चाहिए कौन ना जदि आम पैसा दूचु से सबुदिन काम करेंगे बा हुए तो 10 घंटा रु 15 घंटा कि 20 घंटा काम करेंगे कि जो गाइडलाइंस रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अनुसार जो सिक अच्छा कौन लोक बा किए डिजेबल अच्छा से ओल्ड एज हो जाइए कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अच्छी से टाइम ये सब फैसिलिटीज दे पार आखि आगे रखिकी ही गवर्नमेंट लॉ किंबा पॉलिसीज तैयारी करा जाए थाए। देन कमिंग टू आर्टिकल 42. Article 42 says about to make provision for just and human conditions for work and maternity relief. आम ए डिस्कसन करते जिते किसी पब्लिक असिस्टेंस जोटा कि ओल्ड एज सिकनेस टाइम रे बा डिजेबल टाइम रे बा अनएम्प्लॉयमेंट रे मिलवा दरकार तेणु कन्स्टिट्यूशन एटा भी गारंटी करुँच थ्रू दिस गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रे हम डिस्कसन करुचे। आर्टिकल 42 इज saying about to make provisions for just human conditions for work and maternity leave. जदि कौन लोक को सपोज गोटे फैक्ट्री रे एमती गोटे रूम करा जो वेंटिलेशन नथिबो प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम नथिबो आ से लोक को तुम 10 घंटा काम कर तेल से हेल्थ हैजर्ड्स दैट लीड्स टू एन नंबर ऑफ डिजीज और हेल्थ हैजर्ड्स को लीड करि पारे तो से कौन करा जाए तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स द्वारा जो फैक्ट्री रे एक्ट लॉ करागला बा कौन कंपनी बा कॉर्पोरेट वर्किंग टाइम्स करुँच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ तैयारी कर लेबर लॉ रे डेफिनेटली दे विल गो थ्रू दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स जोटा कि से मैंने गोटे ह्यूमन प्रॉपर गोटे ह्यूमन कंडीशन रखा दरकार जो थी कि लोक मैंने काम करें एमती ना जे गोटे घरे किसी गोटे रूम रे वेंटिलेशन नथिबो वर्किंग एनवायरनमेंट नथिबो सेठी से काम करने छड़ा जीवो तो जितेबले कौन जगह किसी फैक्ट्री हो बा कॉर्पोरेट हो बा कौन गवर्नमेंट हो जो वर्कर्स माने काम करेंगे से गोटे प्रॉपर कंडीशन रहा दरकार जोटा कि प्रॉपर गोटे मिनिमम कंडीशन रहा दरकार टू वर्क आउ अदर साइड है other side of the article 42 is providing provision to make provision regarding maternity relief तेणु मैटरनिटी जोटा रिलीफ टाइम रे से टाइम रे तांको दिया जाउची धीरे धीरे जोटा कि 3 मास थिला मैटरनिटी लीवटा सेटा बॉडी के 6 मास हो गलानी गवर्नमेंट करि साचंती आउ ता संगे से माने पैटर्निटी लीव मध्य ऐड कर दोचंती तेणु जो मैटरनिटी रिलीफटा भी गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट different government and non-government organizations they are providing maternity leave as well as paternity leaves. Then the other one is article 43 and 43A. Article 43 says about to secure a living wage, a decent standard of life, social and cultural opportunities फॉर ऑल द वर्कर्स एटा बेसिकली लोक मानकर सोशियो एंड इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड को अपलोड करने प्रिंसिपल्स गुड़िक या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रे गुड़िक इनक्लूड कराई। सो व्हेन आर्टिकल 43 इज टू सिक्योर लिविंग वेज मिनिमम गोटे लिविंग वेज तांको प्रोवाइड करवा दरकार डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से माने पाउथिबा दरकार सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को से माने अवेल करवा दरकार फॉर ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस whether it is government or private they should be secured with living wage गोटे पंचीबा पई जति वेज हवा दरकार सेठी से मानको पाइबा दरकार डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड आल्सो सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दीज आर द guidelines or principles which are included in article 43. Then coming to article 43A which was added in 42nd amendment 1976 जोटा कराइतला to take steps to secure the participation of worker in management of industry जोटा कि आमे आज देखुचे the management of the industry participation of workers and nowadays different organizations different corporate they want to include the
workers or working class people in the decision making process of the organization or in the management of the industry. When we are going to like develop our industrialization in the country, and at the same time with the industrial development we need to think for the workers development and the involvement of the workers for the real or effective management of the industries. So, the article 43, it is addition to article 43, it is article 43A is saying about to take steps to secure the participation of workers in the management of industries. So, in industry management रे सेमानकु participate करबा पई दरकार बोली कुहा जायछि. So, these are the principles which are included or defined as the socialistic principles or socio-economic principle in directive principles of state policy. After directive principles of state policy, we discussed on the socialistic principles. Now, we are going to discuss on the Gandhian principles. As we know, these articles are based upon or the principles included in Gandhian principles are based upon the ideology of Gandhiji or Mahatma Gandhi, the father of nation. So, based upon his ideology is to provide more opportunity and empower for self government at the local level. जोटा ग्राम स्वराज बोली आम डिस्कशन करिचे. So, ग्राम स्वराज concept it is the like opinion and the ideology of Gandhian principle. Based upon that, the articles which are included in Gandhian principles, they ensure that ideology. So, the articles included in the Gandhian principles, they ensure Gandhian ideology and it is based upon ideology of Gandhiji. So, to start with the article 40, article 40 says to organize village panchayat and endow with the necessary powers and authority to enable them to function as unit of self government. So, article 40, when we are discussing about article 40, it is saying about village panchayat and to empower with all the necessary powers and authority to provide a self government at the local level. This particular article is ensuring about that local self government. So, as we discussed during the introduction of directive principles of state policy, this is one principle which is now a compulsory law for the nation, and based upon that we are having Panchayat Raj institutions and now it is a law in the country. So, when it was realized that it must be implemented at the grassroots level for real democracy in the country, then it was included as a law and it is as per the 73rd amendment in the constitution in 1992. Now, it is implemented in different states as well as for the objective to achieve a local empowered self government at the grassroots level to achieve self democracy. So, today when we discuss about the socialistic principle, rest of the principles starting from the Gandhian principles and the liberal principles will discussed in the next class, but it is not a very complicated articles, but it is very easy to remember, and based upon that article you can also remember the principles which are based upon a specific nature. Thank you so much.